स्टडी गाइडन विथ मी के बुक रीडिंग सेशन में आज हम पढ़ेंगे होमियोस्टासिस मेंटेनेंस ऑफ ए नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है। सो इन 1929 अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट वाल्टर कैनन 1871 से लेकर के 1945 coined the term homeostasis to describe the maintenance of a nearly constant condition in the internal environment. Essentially, all organs and tissue of the body perform function that helps to maintain these relatively constant condition. For instance, the lungs provide oxygen to the extracellular fluid to replenish the oxygen used by the cell. The kidney maintains constant iron concentration. The gastrointestinal system provides nutrients. The various iron, nutrients, waste product, and other constituent of the body are normally regulated within a range of values rather than at a fixed value. For some of the body constituent, this range is extremely small. Variation in blood hydrogen ion concentration for example are normally less than 5 nanomoles per liter, जो कि 0.000000005 मोल्स पर लीटर होता है। ब्लड सोडियम concentration is also tightly regulated, normally varying only a few millimoles per liter, even with large changes in sodium intake. But these variations of sodium concentration are at least 1 million times greater than for hydrogen ion. Powerful control system exists for maintaining the concentration of sodium and hydrogen ion as well as for most of the other ion, nutrients, and substance in the body at level that permits the cell, tissue, and organ to perform their normal function despite wide environmental variation and challenges from injury and diseases. A large segment of this text is concerned with how each organ or tissue contribute to homeostasis. Normal body function require the integrated action of cell, tissue, organ, and the multiple nervous, hormonal, and local control system that together contribute to homeostasis and good health. Disease is often considered to be a state of disrupted homeostasis. However, even in the presence of disease, homeostasis mechanism continue to operate and maintain vital function through multiple compensation. In some cases, these compensation may themselves lead to major deviation of the body function from the normal range, making it difficult to distinguish the primary cause. चलो इसको भाई कहाँ ये मुझे पहुँचा दिया है मुझे ही पता नहीं।
primary cause. Okay, primary cause of the disease from compensatory response. For example, disease that impair the kidney's ability to excrete salt and water may lead to high blood pressure, which initially helps return excretion to normal so that a balance between intake and renal excretion can be maintained. This balance is needed to maintain life, but over long period of time, the high blood pressure can damage various organs, including the kidney, causing even greater increase in blood pressure and more renal damage. Thus, homeostatic compensation that ensue after injury, disease, or major environmental challenges to the body may represent a trade off that is necessary to maintain vital body function, but may, in the long term, contribute to additional abnormalities of the body function. The discipline of pathophysiology seeks to explain how the various physiological processes are altered in disease or injury. This chapter outlines the different functional systems of the body and their contribution to homeostasis. We then briefly discuss the basic theory of the body function system that allow the functional system to operate in support of one another. Now, extracellular fluid transport and mixing system, the blood circulatory system. Extracellular fluid is transported through the body in two stages. The first stage is movement of blood through the body in the blood vessel, and the second is movement of fluid between the blood capillaries and the intercellular space between the tissue cell. Figure 1.1 shows the overall circulation of the blood. All the blood in the circulation traverses the entire circulatory circuit an average of once each minute when the body is at rest, and as many as 6 times each minute when a person is extremely active. As blood passes through the blood capillaries, continual exchange of extracellular fluid and also occur between the plasma portion of the blood and the interstitial fluid that fills the intercellular spaces. This process is shown in figure 1-2. The walls of the capillaries are permeable to most molecules in the plasma of the blood, with the exception of a plasma protein, which are too large to readily pass through the capillaries. Therefore, large amount of fluid and its dissolved constituent diffuse back and forth between the blood and the tissue space, as shown by the arrows. This process of diffusion is caused by kinetic motion of the molecule in both the plasma and interstitial fluid. That is, the fluid and the dissolved molecule are continually moving and bouncing in all directions within the plasma and the fluid in the intercellular spaces, as well as through the capillary pores. Few cells are located more than 50 micrometer from a capillary, which ensures diffusion of almost any substance from the capillary to the cell
within a few seconds. Thus, extracellular fluid everywhere in the body, both that of the plasma and that of the interstitial fluid, is continually being mixed and thereby maintaining homogeneity of the extracellular fluid throughout the body. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिस इज कैपिलरीज, दिस इज आपका वेनस एंड, दिस इज आर्टेरियल एंड। तो ये सप्लाई हो रहा है, यहाँ से वेनस ब्लड जा रहा है एंड वेनस ब्लड सीधा जाएगा कहाँ तक, यहाँ पर हमारा किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहीं पर इस पार्ट में क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का होता है, ये पार्ट रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज आर्टेरियल एंड, दिस इज वेनस एंड। यहाँ पर कैपिलरी है, आर्टरी वेनस जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर कैपिलरीज होता है, ब्लड कैपिलरीज। ये हमारा किडनी एंड ये हमारा गॉट एरिया होता है। तो गॉट एरिया में ये खास करके न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन जनरली यहाँ पर होता है एंड ये हमारा गॉट है एंड ये हमारा राइट हार्ट का पंप होता है, ये हमारा लेफ्ट हार्ट का पंप होता है, ठीक है। तो इधर वेनस ब्लड आएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड माना जाएगा एंड आफ्टर लंग्स को जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा तो लेफ्ट हार्ट पंप करने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर भी जाएगा, ठीक है। एंड ये इसी तरह से यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ये आएगा पूरा बॉडी को सप्लाई करेगा, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एंड यूज होने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड होकर के ऐसे मूव करता है एंड उसी तरह से ये इधर भी आएगा। तो यहाँ पर नीचे वाले जो ऑर्गन को ऑक्सीजनेशन देगा एंड यहाँ पर कैपिलरीज है, वेनस ब्लड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा लंग्स को ऑक्सीजनेशन होने के लिए, चलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे ऑरिजिन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, मैं ये बता दे रहा हूँ, ये जनरली गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी है, जो कि आप देख सकते हो। ये जनरली 13th एडिशन, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा ये पढ़ने में इतना इजी ये नहीं लगता है, जबकि गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी जो 4th साउथ एशिया एडिशन, यहाँ पर देखो 13th एडिशन है, ये 13th एडिशन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं लग रहा है, 4th साउथ एशिया एडिशन ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। मैंने 4th साउथ एशिया एडिशन भी पढ़ा है इसी गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक बुक रीडिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।